So in English, am I right? Yes, ma'am. Both the courses or just communication skills? Ma'am, just communication skills. So अभी भी को रह गया कि इनको सिर्फ एडमिट करते रहेंगे. That's why I don't like Zoom at all. इसकी कोई टीम शेम नहीं बनानी होती आपने. इसकी भी कोई टीम होती है एमएस की तरह Zoom की. मैम आई थिंक इसमें शायद नहीं होती, सबने ज्वाइन ही करना होता है अलग अलग. So good morning everyone and welcome to the class. And now we will start our course, and the content which we will be studying and focusing will be very important. So let's bring the connection, make the connection between your previous knowledge and the upcoming knowledge. Let me ask you a few questions. What have you learned from the course of communication skills? What was the aim in your view? How to communicate and interact with other people or other organizations. How to communicate, interact with people. So in any case, you interact with them. वो तो आप नहीं भी आप course होता तो you can interact. Or what do you think? What was the aim behind the course? Do you know what are language skills? Language skills क्या होती हैं? What are language skills? Language skills. You have studied the course. You are like using social media all the time, and you are dealing with academic or using language at university and at home and everywhere. So can you tell me about the language skills? Is anyone there? मेरे ख्याल अभी तक सिर्फ उज़ैर की आवाज़ आ रही है मुझे. Am I right or wrong? Ma'am, language skills are, I think, just like that. How can we communicate with others in written form, or how can we read a language, or how can we use to communicate it, or our fluency, or how academically we strong in it, something like that. This is Uzair. So let me tell you one thing before we take off. Your CP contains 10 marks. और class participation के लिए अगर if I'll always have a diary with me, and if you will not participate and if you will not respond or if you will not share anything, you will be not getting these 10 marks जो आपके एक मुफ्त के नंबर है आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के और आपकी अटेंडेंस के. सो अगर आपको मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन यहाँ छोड़ दिया बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम जब भी मैंने आपसे बात करनी है और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ऑटोमेटिकली दे आर लाइक दे दे आर लाइक क्या कहना चाहिए आपके टीचर के हमेशा ध्यान में होते हैं. टीचर रिमेंबर्स देम ऑलवेज, नॉट ओनली ड्यूरिंग द क्लास इंटरेक्शन और उस सेशन तक, बल्कि आगे ज़िंदगी में भी कभी आप मिलते हैं तो शी विल और ही विल रिमेंबर यू through that interaction. So I will appreciate if you will try to understand or participate or add something, because everyone is individual, every individual is unique here. Or आपका experience might be different from mine, or I might learn a lot of things from you as well. So इसलिए आप hesitate मत क्या करें किसी भी वक्त कुछ भी शेयर करने के लिए. So let me clear you one thing. बहुत अफसोस आता है एक टीचर को इस देखकर कि आफ्टर लाइक स्टडिंग कोर्स फॉर 3 months यू डू नॉट हैव मच टू टेल अबाउट दैट थिंग. कोई आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको यू डू नॉट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ योर टीचर और इस तरह. सो लेट मी क्लियर वन थिंग व्हाई वी ऑफर्ड यू. सबसे पहले तो आप ये ज़हन से निकाल लें दैट दीज कोर्सेज आर नॉट वेरी यूजफुल एंड यू माइट नॉट नीड देम. मैंने कल उस दिन भी तो जब हमारी पहली इंटरेक्शन थी आई shed light on the importance of these courses.
If you are competent in engineering, you might study, you might be taught 60 subjects. कितने subjects पढ़ते हैं आप लोग? Ma'am, around 50, I think. 50. So, imagine that you are studying 50 subjects almost approximately. And if you have a knowledge, you know about the subject and you have memorized them thoroughly. But when it comes to application, when it comes to like transfer the knowledge, you are not able to perform. You do not have skills to transfer your knowledge. तो ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। कैसा होता है कई बार हम लोग बच्चों के एग्जाम लेते हैं और वो बच्चा क्लास क्लास में इतना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा होता है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग उनका मेरे अभी एक दूसरी यूनिवर्सिटी में बच्चा एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग 80 प्लस मार्क्स फ्रॉम दैट चाइल्ड और जो उनका सबमिटिव एग्जाम हुआ और द चाइल्ड वाज नॉट एबल टू राइट few lines properly even though he was he always sit at the front and he always participated like हर चीज में so I was really I felt sad कि ये बच्चा has almost failed in the final exam. How it happened? So because he was maybe like study reading things, he was maybe like interacting well, but uski writing skills was not fully developed. So language skills are the four skills like your of the language in which you have to deal in your life throughout your life from the beginning till the end. When the child is born, they automatically learn to they one of their skill automatically acquire. They acquire one skill, or usse he kept on acquiring the other skills. Acquisition is a natural process, whereas the learning is an artificial process जिसके लिए आपको you have to put in effort और conscious effort करनी पड़ती है. When a child learn, the first thing they like learn to do is क्या? What do you think? What is the first thing they start doing is understanding is Listening. yes, of course. Listening is the first skill where the child start acquire. वो जब they automatically they get the stimuli, वो उसको सुनते हैं और they start responding. Then the other skill, the result of the listening is Reading, Speaking. जी, reading, speaking, Speaking. yes, Understanding. speaking, understanding, or then speaking. Speaking, the result of listening is speaking. And when the child grows up and starts going to school, the first skill they start to learn is listening, Reading. 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 So जब आपकी learning का stage आती है when you were at the stage of acquiring, you listen and you speak. It's a natural phenomena. No matter you learn it or not. आप जब if you are normal if a normal human being, आपने सुनना है और आपने बोलना है. It depends upon the context you are living. इधर से पहले बात शुरू करते हैं यहाँ ही से हम वी रिलेट दिस थिंग टू आवर टेक्निकल स्किल्स आवर कम्युनिकेशन स्किल्स आवर फंक्शनल इंग्लिश कोर्सेज क्यों आपको ऑफर किए जाते हैं जब इतने रिसर्चर्स ने आपको ये कोर्सेज ऑफर किए हैं वो इसलिए ऑफर किए हैं बिकॉज वी आर डाइवर्स ऑडियंसेस वी बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स आपके पास यू माइट हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको पता चलता होगा their native language does not allow us he or she to utter some sounds because their native language unki interference aati hai. You might belong from Multan, you might be from Pakhtunkhwa, you might be Punjabi. So यहाँ पे भी आपकी एक ethnicity फर्क होती है. Then you will be having different accent dialects. So आपको communication skills का course इसलिए offer करते हैं. So your accent, your fluency, you become fluent, you become confident, you improve your speaking skills. आपका communication skills का जो course है that is based on your speaking efficiency and skills and proficiency. Moving forward, अगर आपको functional English का course का भी engineering में मिलता है तो that is based on to polish your skills overall skills that you can use English or you because we cannot ignore English.
Do you agree with or not? Yes, of course, ma'am. हम भी Yes, बातें करते ma'am. हैं. Last night I was like talking to my relative और वो कह रहे थे कि they are Britishers, nationality Britisher है. तो they said कि बच्चा उसका ना बहुत इंग्लिश एक्सेंट में पाकिस्तान में रह के बात करता. मैंने कहा how it happened. She said कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, दादा दादी इसके पंजाबी बोलते हैं, नाना नानी इसके उर्दू बोलते हैं, तो इसका बड़ा वियर्ड किस्म का एक्सेंट हो गया. सो मैं तो आई ऑलवेज वांटेड कि ही शुड स्पीक इन इंग्लिश और ही शुड बी गुड एट इंग्लिश. मैंने कहा व्हाई? You shouldn't have done that because English, we should learn English, we should speak English just for the sake of communication, good communication. मगर आपका जो मदर टंग भी अगर योर मदर टंग इज फुली डेवलप्ड और एफिशिएंटली डेवलप्ड इट could you could learn English in a better way as compared to those जो ऐसे तितर बितर पढ़ सीख रहे हैं इधर इंग्लिश उर्दू पंजाबीज और मिक्स अप जो होते हैं ना वो दे आर नॉट वेरी एफिशिएंटली इन एक्वायरिंग स्किल्स. ठीक है. सो आपको ये चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ऑन डिफरेंट लेवल्स कि आपकी स्किल्स डेवलप हो. नाउ coming towards school learning process when it comes to reading. Reading is a fundamental skill of practical life. आप listening करते हैं, आप speaking होती है, then it comes to when you consciously learn skills. और जितनी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, no matter I'm sending you notes for that, I will ask you questions about that anytime, even in quiz, etc. So when it comes to reading, so you become familiar with the sounds and the words, how the words are formed, then vocabulary, then which deals to your phrases, and phrases deals with the sentences. And from reading, do you move towards writing? The more you will read, the more you will be good at writing. Similarly, when the more you will be listening, और यहाँ पे पाकिस्तान का क्या अलमिया है, the dilemma here is they focus on the productive skills, not on the receptive skills. What are productive and receptive skills? क्या हो सकती हैं? Do you have any idea about it? Productive and receptive skills. ओके. जैसे आप कंप्यूटर में कोई या किसी चीज़ में आप कोई एक चीज़ एंटर करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, इनपुट होता है एंड द रिजल्ट इज द आउटपुट. Similarly, when you listen or you listen effectively or you listen consciously, attentively, you will be responding in a better way. जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप उनके सवालों को अच्छी तरह से समझ लें और then you can respond accurately. अगर वो सवाल गंदम और आप जवाब चना दे रहे, it means that your listening skills are not fully developed. And according to this latest researchers, 60 to 70% of your communication occurs while listening. कि आपकी listening is very important because it may vary. I might इस टाइम मेरे पास कोई हाथ में बुक नहीं है, मैं आपको orally बता रही हूँ. The percentage may vary, but 40, 35, 50 ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं. Because अगर आप उसको समझ ही नहीं रहे और you might not be paying attention. अब बहुत सारी बातें हम लोग लेक्चर्स में आपको करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड वी थिंक कि वी हैव गिवन यू अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस और हमने आपको गाइड कर दिया. बट व्हेन इट कम्स टू टास्क और रिजल्ट्स, तो हमें अभी वी गॉट टू नो कि आप सुन ही नहीं रहे होते. यू डू नॉट पे अटेंशन. You might have headphones in your ears and you might be listening or some songs और अब हम आपको देख भी नहीं रहे. They will keep on coming. Okay. सो अब इस तरह है कि ये बच्चे जब आते रहते हैं ना, द होल लाइक फ्लो जो होती है ना, वो उसमें एक डिस्टॉर्शन आ जाती है. सो वेयर वर वी? लिसनिंग. सो लिसनिंग वाज इज really important. और अगर आपकी listening skill develop होती है, then automatically that it shows that your listening skill is just receptive skill, and the production of your listening skill is your speaking skill. Likewise, when you go to school, you start reading and you getting familiar with everything aspects of language. The product of your reading, the more you read, the more you could write well. So the product of your reading is your writing. Listening and reading is your receptive skills, are your receptive skills. Speaking and writing are your productive skills. अब हमने भी देखें जो कोर्सेज प्लान किए हैं आपके लिए, वी हैव फोकस्ड ऑन योर
productive skills. Aim of communication skill is fluency, whereas the aim of technical skill writing course is accuracy, which means your writing skill. इन दोनों के दरमियान में हम रिसेप्टिव स्किल्स को कहीं भूल गए हैं. सो दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें रादर देन memorizing your content. Try to understand it, try to analyze it, then try to apply your knowledge, then you evaluate your knowledge, synthesize your knowledge, then you evaluate your knowledge. आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का पता है? Have you ever heard about it? Bloom's taxonomy? No, ma'am. It's like जैसे आप अब इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में you uh, come to know about very basic things. Then you start comprehending the things that आपको knowledge आने लग जाती है तो आपको पता चलने लग जाता है these are the things which are available for this construction of something. Then you आपकी comprehension level develop हो जाता है. अब आपका basics आपके पास है. On those basics you will start building your structure. ठीक है, उसी से आपने आगे जाकर आपकी knowledge enhance होती जाती है. Then you are in a position to recognize those things. Then you are in a position to apply those things in practical life, in your experiments, in your labs, or then you are in a position to analyze your work. ये different Bloom ने आपको different levels दिए हैं of your understanding, of your learning, of your knowledge. क्या पहले आपको first the basic level is your knowledge. You gain knowledge, then you understand that knowledge, then you apply that knowledge, then you analyze that knowledge, then you synthesize. Synthesize means कि आपके पास bits of knowledge है, different bits of knowledge. You know a lot of things, and then you combine that knowledge, synthesize, उसको combine करके उसको आप एक बड़े project की शक्ल में ले आते हैं, और then you evaluate your project, your work, your knowledge and everything. समझ आ गया मेरी बात की? सो अल्टीमेट जो आपकी निचले लेवल पे आपका जो है ना फर्स्ट 3 स्टेजेस पे, जो अल्टीमेट लेवल इज योर कॉम्प्रिहेंशन. हर स्किल का जो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए दैट यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो अभी तक मेरी बात आपको कोई मुश्किल तो नहीं ना लग रही? No, ma'am. Thank you. Okay, if you do not understand anything, if something is difficult for you, you can ask me. You are always welcome to ask questions. Okay? So, communication skills का आपको पता चल गया कि we prepare you for the spontaneous responses, for your interviews, for your interaction. कि आपने मुझे ऐसा लगता है कि you gain a lot of confidence when you present, when you have आपकी क्लास में informal presentations होती हैं और a lot of things. Now, अब हम आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं for your professional life, for your professional documents. For that purpose, you have been offered this course. अब आपको slides नजर आ रही हैं? Yes, ma'am. Yes. Good. You can say now you are moving towards to the next level of your skills. You can communicate, you can speak. अभी मेरे पास बहुत ही एक disappointment अभी रही है results में. The people, the students which were really good at their interaction, and they were very good in their communication skills and like participating in the class. When it comes to their reports and their written work, they really disappointed me. So I really want कि अब आपको हम इस तरह मैं plan करूँ course कि when it comes to your final project, when it comes to your writing, you should be very good. So this is the next, or you can say the advanced level of your, because this is the final step of your language skills also, और यही चीज़ है which will determine or which can break your future. For instance, if you want to apply abroad,
if you want to apply in multinational companies or you want to apply for your masters, you have to send them a written document at first. Uske baad they will decide whether you are able to be able candidate for that particular job or for education or academics or not. So आपका जो written document is very important. For instance, अगर आप इंग्लैंड के लिए अप्लाई करते, you need to design a personal statement. Then you apply for some multinational, you need to apply your CV, like design your CV. और अमेरिका में they give you a very large document. अगर आपने वहाँ पे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, first of all you will be sending them their वो जो स्टेटमेंट होती है, देन ये दे विल सेंड यू एक बड़ी सिस्टमैटिक सी आपको एक क्वेश्चंस देती है 5 10 15, जिसमें आपने हर सवाल का जवाब देना होता है और उसमें भी आपने यू हैव टू प्रूव whether you are your interest and your skills are able are enough for that particular thing or not. Last year, last year, 6 साल पहले, my son applied for and he got very good, very exceptional result. And he was a prefect of HSN, but he got rejection from England just on the basis of कि उन्होंने कहा like कि we were all working on it on his personal one page document. Personal statement is one page document. 650 लफ्ज का आपने लिखना होता है and everything is dependent on that. आपकी जितनी 10 12 साल की मेहनत है, आपका पूरा स्टेक उसके ऊपर था. और उन्होंने क्या किया, they said हालांकि he's an economic student और उसका A star था उसमें, and this they refused that admission on the basis that your personal statement did not match the intended course you applied for. Your interest, your keen interest cannot be shown from your personal statement. How frustrating it is ना कि जिस चीज की आपने इतनी दिन रात मेहनत की है and you are not even been offered, मतलब बात चल इंटरव्यू के लिए कि आपको at first step you are rejected. So that is how in practical life things works. आपकी written skills are so much important. अभी आपके यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, आप ऐसे अपनी जितनी भी जिंदगी की आए बाएं शाये राइट लेफ्ट जो सीखा होता है, आप उसमें डाल देते. यू डू नॉट इवन फोकस ट्राई टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. क्या आपको पूछा क्या है. अभी मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया इन टेक्निकल राइटिंग. आई आस्क्ड दैट इंट्रोडक्शन, मैंने उनको पढ़ाया कि आई गेव देम अ स्टेटमेंट टाइटल or the like you can say problem statement कि why technical writing is important for the prospective engineers. Write the introduction, design introduction related to this report. ठीक है. उन्होंने मुझे पता क्या जवाब दिया. Can you guess? उन्होंने मुझे सारे इंट्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स लिख के दे दिए कि इंट्रोडक्शन कंटेन्स दिस थिंग, इंट्रोडक्शन कंटेन्स दिस थिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंट्रोडक्शन में, ये होता है. और कहीं उन्होंने रिपोर्ट के बारे में बात ही नहीं की. व्हाई टेक्निकल राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियर्स. उसका बैकग्राउंड देना था, उसको इंट्रोड्यूस करना था, उसको आगे जाके उसका स्कोप और पर्पस बताना था. उन्होंने सब चीज़ों की हेडिंग दी, बट वो इंट्रोडक्शन के हवाले से दी, नॉट फॉर द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट. So that is how you do not pay attention to the question. Okay, ji. Can anyone tell me about what are language skills? Except Uzair. Yes, ma'am. Uzair ke alawa. Yes, ma'am. Yes, who is this? Mubin. Mubin. So whosoever is participating, उसके हर रोज के बेसिस पे उसके नंबर लग रहे हैं. I'll give them extra credit. Okay, Mubin. Yes, ma'am. 4 skills, I think so. You know, listening, you should know more about it. Listening, speaking, and then we come to writing, reading, and in the last we come to writing. Good. Reading, listening, speaking, the hierarchy, natural hierarchy of the language skills are listening, speaking, reading and writing. ये अल्लाह ने भी हमें इसी तरह इसको develop किया है. ठीक है. And what are productive skills and what are receptive skills? Can anyone else tell me except Mubin and Uzair?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who is this? Sarfaraz. He's Sarfraz. Yes, ma'am. Listening and reading are receptive skills, and speaking and writing are the productive skills which we employ. Very good, very good. सरफराज आप मिर्जा हैं? Yes, ma'am. ओके, इसलिए कि सामने आपके नाम से मिर्जा आ रहा है, सरफराज नहीं आ रहा. ओके. So Okay. these are the receptive skills and productive skills. So what is the difference between accuracy and fluency? What are the skills fluency aim to develop? Fluency deals with where your oral skills. Your oral skills deals और उसमें कौन सी skills आ जाती हैं? Very good. Well done. Listening and speaking are the skills which deals with fluency. उसका क्या purpose है? Because they are very technical skills. इसका एक जहाँ advantage है कि आप कुछ भी बोल लेते हैं and you are communicating and its message has been communicated. That's fine. So मगर if अगर आप पे ये बंद हो जाए, you have to rejoin it. Do you know that? Yes, ma'am. अच्छा, so अगर आपकी because they are very crucial, very complicated also. क्यों? Do you have any idea why these skills are very complicated also? And due to different languages. there there's so much diversity because reading or writing का तो एक formula है, principles हैं which we have to follow. There are diversity of pronunciations, there is diversity of dialects and a lot of other things. The interference है, आपकी mother tongue की है, एक और भी है. There is a very crucial and important point. Ma'am, Yeah, in speaking, accent and practice is also very important. yes, it's very important. There is one more thing. मैम ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है इसलिए नहीं, वो तो आप मैं इससे हम वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल स्किल्स की बात हो रही है कि ये क्यों इतनी क्रूशल होती हैं और ये दोनों स्किल्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं. मैं बताती हूँ आपको. दे आर जस्ट लाइक वी स्पीक इन अ वी टॉक इन अ फ्लो, or if you ask me to repeat the same thing, I might not utter the same words or might not use the same words. My mood might change. कहीं के पहले शायद मैंने कोई थोड़ा सा सार्कास्टिकली आपसे बात की, टॉन्ट किया हो, साथ ही मैंने कहा कि नहीं भाई इसको इस तरह नहीं कहना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वे. एकदम से मेरी टोन, मेरी आपने पैरा लैंग्वेज का पढ़ा है? डू यू नो व्हाट इज पैरा लैंग्वेज? पैरा लिंग्विस्टिक्स? No, No? ma'am. Paralinguistics is a skill, non-verbal skill, which is associated with your voice. For example, your up and down of your voice, your pronunciation, your tone, your pitch, your intonation, your stress. Sometimes you put, अगर आप note करें कि आप जिस बात पे stress करते हैं, please don't do that. ठीक है? Please don't. नहीं. She eats an apple. She eats an apple. She eats an apple. And I have uttered one sentence with different stresses and different intonation. आप बताएंगे आपको कैसा लगा? She eats an apple. क्या किस पे मेरा स्ट्रेस था? Eats and apple. Exactly. So we can design 3 sentences for the same sentence, एक phrase clause के लिए. She eats an apple. The first sentence would be, what did she eat? She eats an apple. तो यहाँ पे क्या होगा? Next sentence. Who ate an apple? She ate an apple. Third sentence would be, What did she eat? yes, what did she do? She eats an apple. So मेरा stress ने एक ही stress can change the meaning of the whole sentence. So यहाँ पे मैं just to refresh your knowledge, yes, just to improve your
previous skills also. So there are different skills which you call them prosody or paralanguage, which deals with the different mechanics of your voice. अभी औरत और आदमी की जो वॉइस होती दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. अच्छा आपकी एज कैन मेक द डिफरेंस, योर बैकग्राउंड कैन मेक डिफरेंस, योर अपने घर की ट्रेनिंग कैन मेक डिफरेंस. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स. सो अब हम बात क्या कर रहे थे जिससे ये बात शुरू हो गई, पैरा लैंग्वेज. Fluency and writing. Accuracy. हाँ जी, तो फ्लुएंसी पे हमारा इसलिए जोर होता है टू दो स्किल्स. अच्छा मैं बात करती व्हाई दीज स्किल्स आर कॉम्प्लिकेटेड. वन पार्ट इज दिस कि आपके स्ट्रेसेस, आपकी टोन, आपके मूड्स, आपके और आपकी इंटोनेशन, एवरीथिंग कैन अफेक्ट योर लैंग्वेज. फॉर इंस्टेंस मैंने एक दफ़ा एक CS डिपार्टमेंट में एक प्रेजेंटेशन ली एंड द गर्ल वाज केप्ट ऑन उसका टाइटल था लेक ऑफ नॉलेज. And she kept on criticizing or telling us about the negative things about knowledge or this. At the end, I asked her a question. The question answer session started. I asked her, you said lake of knowledge in Pakistan, so education in Pakistan, and you were keep on criticizing the policies of Pakistani educational system. तो उसके मेंबर एक और बच्चे ने कहा मैम she was trying to tell you about the lack of knowledge, and throughout the presentation I thought that she was talking about the lack of knowledge. So spelling might be ठीक थे, but her एक word ने, then there was no slides, there was no supporting material there. So our listener might be getting the different point of view or might be expecting something different, or at the end आपको लगे कि that you have wasted the time because आपने जिस चीज से concern आपका topic था आपने उसको उस तरह उसको view नहीं किया, आपने उसको इस तरह understand नहीं किया. Please send a message in your class that they should not come now. अभी तक after the 55 minutes of the class और अभी तक बच्चे आ रहे हैं. Tell Okay, them ma'am. not to join now. और अगर वो आएंगे भी तो I will not let them, I will not mark them present. Okay जी, where were we? So these skills are, that is crucial in that way कि जब आपको आप if we will repeat the same thing, we might not utter in the same way. The thing or situation might be different. So listening and writing is crucial in that way. और दूसरी तरफ reading and speaking are very very standard. अब आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों skills, there might be some casual aspects, informal aspects, whereas in reading and writing there cannot be any informality. They are very standard. There is no room for mistakes. Therefore, accuracy deals with those skills. अब आपको समझ आई है why we associate accuracy, even though आपकी professional life में आपकी accuracy will also will be gauged in the previous two skills, but क्योंकि आपकी स्पीकिंग और जो लिसनिंग है वो इस तरह फ्लो में चलती रहती है और you cannot go back again and again to assess it. But when it comes to reading and writing, अब जैसे I have reports with me, I have read those reports at least 10 times. And whenever I read it, आप जब अपना भी काम करते हैं ना तो आप रिपोर्ट लिखेंगे इंशाल्लाह. और अब इस कोर्स के बाद when you will be reading your previous lab reports, तो आपको पता चलेगा the things you might be lacking in those reports. और एक और बात आज आपको बता दूं, if you want to be different, if you want to excel in life, you have to pay attention in your basic things, in the things which are the fundamental of your knowledge, your profession. So you cannot ignore language, you cannot ignore. जैसे ही आपकी language skills develop होंगी ना, आप मेरी बात याद रखना कि automatically you will feel difference in your personalities also. आपको एकदम जैसे अगर आपकी speaking skills develop है, if you are having a good writing skills, आपकी writing skill automatically deals with your aesthetic sense, your creativity. You will not be any more a nerd or a robot kind of character. आपके अंदर एक खूबसूरती खुद ही develop, आप एक romantic, एक बड़ी fresh सी feeling आ जाएगी.
positive attitude towards life. ये आपकी ये अल्लाह ताला ने इसका कनेक्शन जोड़ दिया है आपकी पर्सनालिटी पॉलिशिंग के साथ और पर्सनालिटी शाइनिंग के साथ, ठीक है? सो राइटिंग या रीडिंग की बात हो रही है, व्हाई दे नीड एक्यूरेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टाइम, दे आर लाइक अ बीट्स इन द स्ट्रिंग. जैसे आपके बीट्स होते हैं ना एक स्ट्रिंग में, आपने तस्वीर में देखे हैं, कभी आपने देखे हैं कि छोटे बड़े उल्टे सीधे दाने लगे हों? सिर्फ वहाँ पे एक होते हैं स्पीड ब्रेकर की तरह, आपको बताने के लिए एक बड़ा दाना आता है कि दिस इज द टाइम दैट यू शुड टेक अ पॉज, और ये आपको यू शुड नो हाउ मच you have read already. Otherwise, they are all in one size और बड़ी ही खूबसूरती से परोए जाते हैं. और if they are different in sizes, different in weird colors, you might not choose them. You might not like them because you think they are not properly designed. Similarly, when it comes to your writing and writing which like you can say um, जो आपकी टेक्निकल राइटिंग है वो तो देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक्स, देयर इज नो रूम फॉर शेपली डिजाइंड वर्क, अदरवाइज पीपल विल नॉट. आई डोंट लाइक माय नेम, वेरी आउटडेटेड. मैम राकेश तो चलो ठीक था, ये रूज लगा के इन्होंने मुझे फंसा दिया है. यू राइट. अच्छा अब देखिए ना, यहाँ पर मैं दोनों फंसे हुए. मेरे बाद भाई हुआ, वी वर 3 sisters and I was not allowed to even change it. I मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया कि I don't like this name और मुझे बहुत बुरा लगता है. But they said कि आपके बाद भाई हुआ है and I have only one brother, so I don't have any other option. But आपके पास तो ऑप्शन थी, आप तो चेंज कर सकते थे बात. मैम बता नहीं था कैसे चेंज करते हैं. बस आप मिस्टर राकिब भी लिखा करें. आप वैसे इंग्लैंड में या बाहर के मुल्कों में दे कॉल यू फ्रॉम द सेकंड नेम, जो आपका सेकंड सरनेम या जो भी साथ होता है ना सेकंड, उससे देते लाइक मिस्टर मिर्जा और ऐसा मलिक, और दे कॉल यू फ्रॉम दैट. तो अब आपको फिर वहाँ पे रूज कह के बुलाएंगे क्या बाहर चले गए. मैम वो यहाँ भी यही कहते हैं. हाँ, हो से दैट वेरी बैड. इतना प्यारा नाम है राकिब का, मुझे बहुत अच्छा लगे नाम से राकिब. Okay, do we have foreigners in the class except that Jaya? Ma'am, she is the only one. Okay. Last time जब मेरी आपके साथ interaction हुई थी, there were a lot of foreigners in your class in communication skills course. Ma'am, they were, but Okay, that's good. अच्छा जी. So what we were discussing, so all of you are here again. Yes, ma'am. आपको पता क्यों अच्छा लगता है कि Zoom पे ना एक तो टाइम कम रह जाता है और you people really enjoy it, huh? Okay. So we were talking about reading and writing, why they are so we need accuracy in that, and why they are always standard. Standard, आप ये देख लेंगे, standard language can differentiate your status also. कि जितना लोग स्टैंडर्ड, इवन व्हेन इट कम्स टू योर उर्दू, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, और एनी अदर नेटिव लैंग्वेज, द वे यू स्पीक और अटर योर नेटिव लैंग्वेज, स्टैंडर्ड वर्ड्स, और अगर जितना आप ओ यार क्या कर रहा है तो किधर था, ये था वो था, तो ऑटोमेटिकली ये नॉन स्टैंडर्ड बातें हैं. व्हेन इट कम्स टू जो फॉर्मल सेटिंग आती है और स्टैंडर्ड होता है और आप एक प्रेस्टीज की बात आती है, यू डू नॉट इंटरेक्ट विद पीपल लाइक दिस. You use very standard, आप कैसे हैं, आप किधर थे, long time no see, where have you been, or this and that. आप informal conversation नहीं करते. और इसी तरह जब आप अपने दोस्त को एक खत लिखते हैं और एक आप अपने colleague को खत लिखते हैं, there is always a difference. और इसी तरह when you go back to the culture of this language, जहाँ से Britain और जहाँ पे ज़्यादा standard British accent and British vocabulary and British style is the most standard now अभी तक, till now. अभी उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, they are more like accepted, widely accepted, और उनको लोग वैसे भी ज़्यादा prestige की नज़र से देखते हैं. So
आप अगर उसमें देखें कि when अभी आपकी पुरानी सारी skills मैं refresh करती जाऊंगी. When you go back and look at your the learning of your communication skills, you should be taught that how you dressed up, how you use your body language, how you interact with other people, your etiquettes, your soft skills, how your behavior matters. So आप अगर इसी तरह आप इस चीज को लेके आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं, these skills are the basics of your personality. तो जो आपकी आपकी जो advanced skills है like your reading and writing, they contribute to those skills. और आपकी आपकी उसकी आपकी जो नफासत है, आपकी जो पर्सनालिटी का जो एक क्या कहना चाहिए एक इम्पैक्ट है, can be seen from your other skills. So आप ब्रिटिशर्स को देखें, when you meet them at higher level, so you can see they're very formal. When you meet their labor class or the lower class, you can see आप जैसे for example, for instance, I am not a very privileged background maybe. तो अगर मेरे पास मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, और आप में और जो मेरे पिछला बैकग्राउंड है और मेरे रिलेटिव्स हैं, you can see a visible difference amongst yourself and them. Your style, you might not be always ready to indulge in random arguments. You might not like very rowdy style. आपकी 2-3 साल के बाद आप देखिएगा कि that you will feel yourself above from those things. कि आप कहेंगे कि जी नहीं, I have groomed like this, और मेरा profession says, my professional training says that I should be different from those people who do not have knowledge, who might not be literate. उनके उनमें और मेरी ट्रेनिंग में क्या है, और एक पर्सनालिटी कैन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट. आपको ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस अपने रिश्तेदारों से भी फर्क पड़ेगा. कैन यू प्लीज म्यूट योर ऑडियो वॉइस? ठीक है. सो कहाँ क्या बात हो रही थी साहब, आपने बीच में बिल्कुल इंटरप्ट कर देते हैं. स्टैंडर्ड की बात हो रही थी. So similarly, you need to be very accurate. You need to be very standard. The selection of your words, the arrangement your words, and the mechanics of your language should not need should be error free. There should not be any place for your mistakes and other things. So technical writing which that works. What is technical writing? मैं आज आपको और ज़्यादा कहूँगी नहीं, इसको जब बेसिक देखते. What is technical writing? जी, can anyone read the slide for me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. I like the way you are participating. Good. जी. What is technical writing? Communication is essential skill for all professions. Technical writing is the writing of those involved in the technical fields, for example, science and engineering. In sciences and engineering, write technical reports, write technical proposals, various forms of technical communication. Okay. So I have told you about that कि आपको थोड़ा सा पता हो. You should know the difference between the level of your training and your to become more proficient master of your profession. First of all, you were taught communication skills which based on your fluency and your oral skills. Then you might be like, अगर आपको offer होता functional English, which might like make you shine your overall skills in different contexts, maybe in academic even, or maybe in your professional. And technical writing specifically designed for your professional skills, to your daily work. So technical writing involved not only in engineering, there might be involved in other skills like computer, or ये आपकी IT की skills हैं. There are some other skills, आपकी finance की skills हैं, आपकी business की skills हैं. In all those which deals with your professional setup. For instance, in science and engineering, you might be writing technical reports. You might be writing lab reports. You might be writing proposals.
you might be writing letters or memorandums, or you might be writing letter to get something to for your agreement for your meeting or some like किसी contract के लिए. So you in at every step you are using your technical skills. For that purpose, you should prepare yourself as a professional. Just a moment, give me a second, please. एक second में आती हूँ. Back in a moment. So अभी भी आप you are actually dealing with that. आप lab reports लिख रहे हैं from the last 3 years. What I have seen your lab reports, I do not know the technicalities of your lab reports. बहुत सारी चीज़ों को मैं just read the structure of those things. मुझे उनकी like specifications का इतना पता नहीं है, but I am learning it from you. So मगर मैंने देखा है कि for example you like add table or you add some graph in your lab report or experiment का कुछ chart बनाते हैं, you do not give the heading of that, और आप एक statement जो लिख रहे हैं, this table shows this thing and this is the और आगे उसके बाद आपने ये लिखना है, और उसके आगे जिसके आगे थोड़ी सी explanation होती है, and the result of this table this experiment was this. थोड़ा सा discussion से पहले आप हर table के आगे एक छोटा 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखते हैं, जो आपने अब तक शायद मैंने जितनी भी आपकी लैब रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, दे आर वेरी informally designed because आप you think in your view that might be right कि आपको you do not focus on that those things might not be your like preference, but the more you will be आप want to be a different, और अब आपका अगर 50 का एक सेमेस्टर है और 200-300 का एक बैच है, उसमें में 4 या 5 बच्चे will be only those students who will be like working on the top notch or top level. Why not the rest of the students? But they might not put in that much effort. And wo effort you can see it not starts from here. They have been doing their work from their childhood. Or wo each and everything is important for them. There was a child whom I taught in communication skills, and he has like studied from my colleague, my very close friend, and there was some trouble with him or with the teacher कि वो थोड़ा सा offend हो जाता because he was very conscious about everything. वो बड़ा perfectionist है बच्चा, and I know him. I knew him because I worked with him, और मुझे पता था कि वो एक एक चीज को for example हर चीज का पहले पूरा communication skills में भी मैंने उसका जब portfolio लिया, I have observed कि उसने हर जो भी एक्टिविटी की थी उसका पूरा रफ वर्क भी मुझे दिया हुआ था कि which process he has gone through to design that activity. अब मेरी फ्रेंड को उसको इनिशियली थोड़ा सा वो ऑफेंड होगी कि बिकॉज ही यूज्ड टू रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई गाइडेड हर कि दैट ही इज अ परफेक्शनिस्ट एंड ही विल बी डूइंग इट. एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर शी केम टू मी वन डे एंड शी सेड यू वर एब्सोल्युटली राइट. ही वाज लाइक इतना, इसलिए वो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा टची था कि ही वाज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट and he was working for each and every mark and each and everything was important for him, और वो उसके लिए एफर्ट कर रहा था. He has learned everything with the passage of time. So that shows that this boy will be at the top level. ये हमारी assumption है एक टीचर की अपने स्टूडेंट के बारे में, even though I am not teaching him, कि one day he will be like reaching some level because he is not only intelligent but he is giving his क्या कहते हैं hard work, his untiring effort to his work. So इसलिए आपको मैं बार बार ये कह रही हूँ कि focus on your studies, not only those but those who are the prerequisite for your future. थोड़ा सा बस एक या दो लाइन ये पढ़ेंगे. What is the difference between technical writing? Why technical writing is different from the rest of the writing? Yeah, why other writings are different from each another? You please read the slide. Technical writing versus academic writing. Academic writing is relatively complex because most of the academic papers are tied to a specific discipline or study area. Each technical area will have specialized terminologies that are not known to a normal person. ठीक है. Technical writing is academic writing is relatively complex
because आपकी specific discipline study area की बात हो रही है. So you need to know a lot of terminologies that are associated with academic writing. और एक normal एक lay person को उसका नहीं पता होता. जी आगे. जी please carry on. Can you hear me? There was a Yes, disturbance. ma'am. We can hear. Technical writing is communication written for and about business and industry, focusing on products and services, how to manufacture them, market them, manage them, deliver them, and use them. Okay. So now technical writing communication is written for different in different contexts. It can be used if you are you have a good technical writing skills. It could be useful in your business. For instance, कि आपने किसी multinational या आपने किसी firm के साथ काम नहीं करते engineering की या civil की जो different हैं, आप ऐसा करते हैं कि आप अपना खुद से business बना लेते हैं. So you might, if you need to know how to develop proposal for that, और अपनी मार्केटिंग के लिए आपकी आपकी अपने ऑडियंस के जिसको आप केटर करना चाह रहे हैं, you can do it on your own even. You might not be needing any facilitating authorities or guide with you. आप अपना प्रोडक्ट खुद से लॉन्च कर देते हैं, आप उसको फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको how you manufacture them. So these skills can be applied in different aspects of your professional life. जी. And the purpose of academic writing is to represent the result obtained from one's academic research. However, in some cases, it is also used to show someone's point of view about a topic. Technical writing is written in the work environment in office from 8 to 5, not counting overtime for supervisor, colleagues, subordinates, vendors, and customers. Okay, so you might say research writing is a part of your academic writing. Here you can obtain data and you can tell the researcher's point of view based on that data. Whereas technical writing is used in your everyday life. So that is not maybe within your colleagues, maybe your subordinates, maybe you might be using your technical skills and your technical writing skills or other technical skills when you deal with vendors, you deal with customers. So there you देखिए अगर आपने अपनी within office जो आप interaction कर रहे हैं और within customer with the like retail and the customer, that might be different. कि आप कस्टमर के लिए बहुत ही पोलाइट और बहुत ऐसे क्या कहते हैं वर्ड्स यूज करते हैं दे दैट माइट नॉट अनॉय योर कस्टमर. वेयर एज अब आप जब अपनी एक रूटीन में आपकी इंटरेक्शन होती है विद योर कलीग्स एंड सुपरवाइजर्स, दैट इज वेरी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल. कि उसमें आप यू डू नॉट देयर टू म्यूज योर और थिंकिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ और द लाइक टेकिंग देयर क्या कहते हैं support कि आपने जैसे कस्टमर की support is very essential for you. जी. Technical writing, which must be understood easily and quickly, includes memos and email, letters, reports, instructions, and newsletters, the job research, web pages, flyers, PowerPoint presentations. So brochures and your flyers क्या होते हैं? आपने देखा one page document अक्सर लोग भाई दे रहे होते हैं. That is called flyers. तो उसके ऊपर आपने कोई चीज़ आपने अपना मैसेज लिखा होता है और they are distributed on the roads और वो आपको देते हैं. These are called flyers. और जो job search के लिए आप क्या करते हैं? You design your CV. Do you know what is cover letter? मैम जिसमें हमारा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह या उसका नेम वगैरह लिखा हो या इस तरह का कुछ. It's a one page document, just a letter, one page letter, जिसमें आप अपना पूरे ओवरऑल जैसे आप एक रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क लिखते हैं, आप रिपोर्ट लिखते हैं तो उसकी एक एग्जेक्टिव समरी होती है और यू कैन से एक एब्स्ट्रैक्ट होता है रिसर्च का. योर कवर लेटर इज लाइक विच इज मोस्टली are widely used before along with your CV and it is attached before your CV or your resume.
कि जिसमें आप लिखते हैं कि दिस इज योर ओवरऑल एक पिक्चर देते हैं आप अपनी स्किल्स के बारे में एंड टेल द रीडर द व्हाई यू आर सूटेबल फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब. So that is the job search के लिए you use that cover letter and then your resume and CVs and you instructions की बात करते हैं. It's your daily routine. When you write about your lab report and you tell you want your reader to know about what procedures you have used, so automatically or unconsciously आप उसमें उसकी instruction को follow कर रहे होते हैं, आप instructions दे रहे होते हैं. First of all, you introduce the topic, then you tell about the specifications, then you mention the procedure, step by step. कि आपने उसमें क्या किया? First of all, you have done that. You did that. Then, and at the end, this was your fun. This was your conclusion, and that was your result maybe. तो इस तरह आप automatically, unconsciously, unknowingly आपकी instruction आपके हर काम में चल रही होती है. आपकी हर लैब रिपोर्ट में, आपकी हर रूटीन के वर्क में यू आर राइटिंग इंस्ट्रक्शन और गिविंग इंस्ट्रक्शंस. सो दिस इज अ वेरी कॉमन एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियर स्पेशली वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं. आपने देखा कि डॉक्टर्स व्हेन दे गिव इंस्ट्रक्शंस अबाउट द मेडिसिन्स मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट इवन एबल टू रीड इट, है ना? ऐसा होता है ना? तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दैट इज रियली डिफिकल्ट बिकॉज आपको अपने एक पेशेंट को यू माइट बी endangering their life because आपने जो लिखा है they might be using the different thing जो guess कर रहे हैं. They sometimes बल्कि most of the time we use prescription on the basis of our guessing skills और reference ऐसे खुद से हम एक तुक्के से यूज कर रहे थे. Am I right or wrong? ऐसा होता है ना? That Yes, is ma'am. why ऐसे ही है. their professional skills should be fully developed. They should know their audience, especially जब आपके सामने नजर आ रहा है कि आपका audience an elderly person, your audience might not be very educated, your audience might not understand, are not getting your point. You should not take that risk. So instructions are really important, and obviously for your professional development, your reports are really important. Once my colleague shared a letter from some department, और हमारे head of department ने हमें बुलाया और कहा कि this is what these children are. और एक और बहुत बुरी बात मुझे सुनने में आई कि I was like saying कि मैंने बच्चों की reports final project लेना है. One of the department asked for a written exam. तो I said कि नहीं, हमारे बच्चों की हमारी ultimate यही aim है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी reports तैयार कराएं and they should be proficient in that skill in their documents. तो उन्होंने कहा कि वैसे भी मैं आपको बताऊं, they're very big department of our university. Their head said कि वैसे भी वो कौन सा सीखते हैं. अगर आप उनके काम देखें तो you will say कि you have wasted your time अगर आप उनका written काम देखें. I was really hurt, seriously. मैं आपको सही बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि हम इतनी जान मार के आपको पढ़ाएं और एट द एंड आपका डिपार्टमेंट हमें ये फीडबैक दे कि अगर हम आपको आपके बच्चों के असाइनमेंट्स दिखाएं देन यू विल रियलाइज कि आपकी आप जो स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करते हैं ना, दे आर ऑफ नो यूज. सो दैट इज व्हाई I always want कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे जो भी सीखे, whether it's written or project based learning, उनका they should learn something which might be useful or applicable in their future professional life. ठीक है? So आज के लिए मुझे लगता है आपके लिए इतना material बहुत है. So if you have any question you can ask. अब there are two people there who are waiting, still waiting. अभी आए हैं. I don't know who are them. Ma'am, their registration number is mentioned in their name, I think. Yes, one is Jawad Ahmed, and I could not see. Let me check. One is Jawad I think Ahmed. 70. 70, or the other one is only Jawad Ahmed. मैं उसको class join करा रही, but you do not mark him present, please. Okay, ma'am. Okay, so any question from here till here? Can anybody tell me about technical writing? What is technical writing? Let me ask. Roll number 61. What is technical writing?
Okay. Hanzla Tahir. Hanzla, आप मैकेनिकल से तो नहीं आए? Mohammed Hanzla might be sleeping. Okay. Mohammed Moin Awais. Yes, ma'am. Hello. जो जवाब नहीं दे रहा उसको आपने प्रेजेंट मार्क नहीं करना. अच्छा जी. मोहम्मद शाहजेब कौन बोल रहा है? अवैस. अच्छा अवैस. Moin. What is technical writing? Can you tell me? Ma'am, technical writing is a kind of a technical report that we write in an office or a professional life for communication between our colleagues and different professional workers. Good. So, Kamar Habib, can you tell me what is the difference between technical writing and academic or other any writing? क्या हो सकता है? Ma'am, in academic writing, we deals with the terminologies that are specified to that subject, but in technical writing, we deals with the journal things that are valid for that area and that are valid for that are used in general communication skills. Professional skill. Good. Yes, ma'am. Well. So, any other thing you want to share about it? We still Ma'am, have some time. technical report writing deals with the productive skills which include writing, and this is outcome of your reading skills, and this is the main importance of technical writing. Very good, very good. For अभी तक जो technical writing को अभी तक पढ़ रहे हैं, so but I think that we should start with the basic mechanics of writing. You might know about a lot of punctuation marks. You might know about some basics of your grammar. So we will refresh our knowledge in the next lectures about these mechanics, because without having a good knowledge, no, we cannot say anything perfect. Nothing is perfect in this world. We should have good knowledge, which should be enough to make a document clear and well designed. For that purpose, along with the sufficient knowledge of vocabulary and structure, we should know how to design them, how to divide the knowledge or the content. उसके लिए हमें we will be starting from our punctuation and the basics of grammar, so and the other techniques of writing. ठीक है? और फिर we will move towards the like ultimate goal of our course. Is that clear till here? Now you want to share something and you want to share about your achievements or anything. And next class, I can ask any one of you to give a quick recap of your previous lecture. Okay? So get ready and I'll share my slides with you. अभी शायद आपके पास आ भी गई हैं. और then I will share some articles with you, reading materials, so कि आप वो पढ़ कर आएं और we can have a good interaction. Jaya, do we have girls in the class? Yes, ma'am. So girls, are you sleeping? No, ma'am. Okay. Can you share something about whatever we have discussed? Who is this? Gia? Who is our Gia? Ma'am, Minahil Munir. Minahil. Minahil? Is she present? Minahil is present? You have only 7 or 8 girls in the class and rest of your boys? Yes, ma'am. 8 girls. 8 or 9 girls, I think. Okay. Let's can anyone say something about feminism? Feminism. Do you believe in it or not? Ma'am, You are somehow, supporting this?
मैम Some of फेमिनिज्म का यस मैम फेमिनिज्म का कंसेप्ट तो इस्लाम में भी है लेकिन कुछ प्रोपेगेंडे पाकिस्तान में इस तरह के हैं जो इसको गलत साइड पे लेके जा रहे हैं ठीक है लाइक मतलब कि जो अभी फिलहाल एक्टिविटीज जा रही हैं ठीक है जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है ये तो इस्लाम में भी मतलब के लेडीज को जो फीमेल जेंडर उनको राइट्स मिलते हैं ठीक है hmm, अब उसको किसी गलत डायरेक्शन में लेके जाना कोई एजेंडा इस तरह का पाकिस्तान में वर्क कर रहा है इस कंसेप्ट को गलत डायरेक्शन में लेके जाके फीमेल जेंडर का माइंड वॉश करते हैं ठीक है तो ये चीज गलत है लेकिन फेमिनिज्म इस्लाम के हद तक ठीक है आई एग्री विद दिस so you think that it's only happening in Pakistan? It's a like नो 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 worldwide. नो मैम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड So not only in Pakistan. Acha. So what do you think? What kind of society we have? It's the need of today to work out for the girls, I think. Hmm. So like studying at Do a you think male-dominated university, what do you think? मैम Are इन they? यूईटी Yes. मैम आपकी बात की समझ नहीं आई आपने क्या बोला मैं वॉइस लड़कियों नहीं आ से रही पूछ रही हूँ that they are like studying or learning in an environment when there is a domination of men. So have they ever felt left out or they felt insecure or dominated by men? Girls, or you are comfortable in this environment? People are like supporting you or taking care of you. इस तरह का है environment हमारे पास? And boys are in a race to get everything and not to let any girl come in front. Like What? if we take an example in a class, they rush to take the front seats and they don't respect girls even to sit in front of them. This is what I have always felt. Okay, they should have the courtesy. Not only the not I'm not talking about feminism or anything else. There should be some respect. और पाकिस्तान में वैसे बाकी मुल्कों से ज़्यादा है. They should give respect to the females and they should give them a place और कि उनको थोड़ा सा देना चाहिए. ये हमारे वैसे सोसाइटी में फिर भी है. If you will go abroad, you might not find it there. वो कहते हैं कि everyone is equal here. So ये आपकी struggle है और आपको एक और बात बताऊं when you go or inshallah work at an international market you will find this domination men domination there also not only मैम एक Domination is मैम एक something पॉइंट else, और भी but है respect is something else. They don't respect girls. We don't have any issue if they dominate or something. they should मैम respect एक girls they should respect नो this मैम fact This they is are a here man's zone. Huh. They are meant to be go out and do these things. They are more strong than us. We don't deny this, but there should be some line and respect thing that they should give to girls. That girls also have हाँ some rights. good अच्छा जी अब आप क्या कह रहे हैं मैम एक हमारे पॉइंट ख्याल और में भी है लाइक मैम लाइक सम गर्ल्स कहती हैं कि नहीं मर्द और जो औरत है मैन एंड फीमेल आर इक्वल वो एक साइड पे तो ये कह रही होती है कि मैन एंड फीमेल आर इक्वल और वेरी नेक्स्ट स्टेप वो दूसरी तरफ से ये कह रही होती है कि जो फीमेल्स के राइट्स है वो हमें दें ठीक है मतलब कि वो डुअल चलती है मतलब कि हमें वो इक्वलिटी भी दें मैन और फीमेल की और हमारे राइट्स भी दें अगर वो कह रही है कि मैन और फीमेल इक्वल हैं ठीक है तो फिर वो फिर वो अगर इक्वल है तो फिर वो अपनी फाइट खुद लड़ें फिर वो मैन पे डिपेंडेंट क्यों करती हैं अभी ये हमें हमारे अच्छा साथ नहीं ऐसे अभी ये कर रहा है अब अभी आप ऐसे कर रहा है अभी ये बात ये she said कि they are Mind. not physically they physically men are more stronger उसने she accepted the fact और ये बात मैं भी हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने God has designed men and women in different ways और वो they are more they are superior in their physical attributes but ये कि मेंटल में आप देखें कि there might be some girls more intelligent than boys वहां पर क्या होता है मेल बायसनेस आ जाती है दे आर नॉट गिवन दैट अपॉर्चुनिटी जो आप लड़कों को देते उसके भी फैक्टर्स होते हैं मे बी कि वो समझते हैं फील्ड वर्क लड़की के लिए इज नॉट मोर अप्रोप्रिएट जैसे कल्चर डाइवर्स हमारे यहाँ पर है हमारा कल्चर दे डोंट वेलकम फीमेल गर्ल्स टू गो आउट मोर मगर ये कि रिस्पेक्ट शुड बी देयर ये तुम्हारे मजहब ने भी कही है कि जो औरत के लिए कि आप रिस्पेक्ट करें और यू शुड गिव देम लाइक इम्पोर्टेंस क्या वो दे सकते हैं
I know they are fighting for. Actually, आपको बुरा पता क्यों लग रहा है? ये these things are new for you because they have just fighting for their rights. You know what kind of society Just we one are point. having? Why can't the men just appreciate and appreciate the girls? Why can't they? They can give the girls support and then they can protect the Yes, girls. जैसे अभी वो हैरी पॉटर की हीरोइन की मैंने कोई स्पीच सुनी एंड शी सेड कि I want men to become a part of this movement because if they will not be a part of this movement will not be successful. कि Why अगर they वो are support करें, because yes, the men jealousy. They can't accept the girls coming out. They can't accept girls coming in fields competing them. They should support them instead. It will be good for yes. all of If them. they are here with you in this university, everyone should support them. Their courage मैम even. They should मैम मैं encourage इस that बात से girls are थोड़ा सा coming एग्री नहीं out. If करता you are in civil engineering, Ma'am, I मैम want to आई add थिंक something. girls have to come Okay. out. Ma'am, in our society, like this is my point of view. In our society, girls are like that. For example, a man is just uh, मैं उर्दू में बोल देता हूँ कि आदमी कमा रहा है तो आदमी जब कमा के लाता है तो औरत ये फील करती है कि वो आदमी पे डिपेंडेंट है और आदमी उसे ला के दे रहा है और फैमिली चल रही है लेकिन उसके एडवर्स जब औरत कमाने लग जाती है वो समझती थी कि वो पहले औरत आदमी के अंडर थी और वो बस इसी वजह से उसके अंडर थी कि वो कमा के सिला रहा था जब औरत कमाने लग जाती है वो कहती है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ जब आदमी को आता है वो कहता है कि मैं फैमिली के लिए कुछ बेटर करूँ लेकिन जब औरत कमाती कहती है अब मुझे मर्द की कोई जरूरत नहीं मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ दिस इज मोस्ट ऑफ cases but there are some rare cases also Here we need to educate girls as well और we will start our next lecture from here हम इसको अच्छी तरह डिस्कस भी करेंगे और फिर इसको आपके अवेयरनेस भी होनी चाहिए दोनों जेंडर्स की ओके थैंक यू वेरी मच और उजैर प्लीज मार्क देयर अटेंडेंस प्लीज ठीक है ओके मैम सबकी अटेंडेंस लीजिएगा एक्सेप्ट हु केम लेट जिन्होंने बिल्कुल एंड पे ज्वाइन किया एक्सेप्ट दोस चिल्ड्रन स्टूडेंट्स ठीक है ओके मैम हेलो मैम नेक्स्ट जी मैम वो असल में मेरा मोमेंटरीली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं पहले भी ले रहा था तो आपने वो कह दिया था कि मेरी भी एब्सेंट मार्क कर देनी है वो भी जवाद दिस इज जवाद यस मैम ओके ये उजैर विल डिसाइड और योर जीआर विल डिसाइड और चेक करके कि वेदर यू वर इन द क्लास और नॉट चलो ठीक है ओके अल्लाह हाफिज